What is your peaceful place on a vacation? Is it when you are at the top of a peak, soaking it all in? Is it when you are at a monastery with that spiritual connection? Is it when you see the nature flow and feel connected with it? Or maybe amidst a little bit of adventure and excitement? Or is it just a beautiful sunset by the lake? Well, whatever the case may be, over the next two videos, I'm going to give you a taste of all of this and a bit more. And if you haven't already watched the part 1 of our trip to Coorg, then you can watch it from this pop-up. और अब start करते हैं. So finally we did reach the point where we are supposed to board a jeep. We were unfortunately the last. Nonetheless, we are in the jeep and we are going to take about 30 minutes to reach the Mandalpatti Viewpoint now. So finally we have reached the top of Mandalpatti. Barely slept for 4-5 hours last night, and the end result for that is not even 50 meters of visibility. फुल रिफंड चाहिए मुझे. एक तो 5 बजे उठना पड़ा, उसके बाद से पीछे थार में जगह नहीं थी, वहाँ पे मुझे घुसा के बैठा दिया. मोशन सिकनेस होने लगी, रास्ता इतना कर्वी और ख़राब था. हवा लेने बाहर निकला तो साले का एग्जॉस्ट मेरे मुंह में आया. 30 मिनट तक मैं सिर्फ वो कार का एग्जॉस्ट खाते खाते ऊपर चढ़ा और इस व्यू के लिए. फुल रिफंड और 3 घंटे की नींद वापस चाहिए मुझे. Given the mist and clouds, our time just didn't do justice to the views that you can get at Mandalpatti. So we put a story on our Instagram asking XTE fam to help us out, and you guys obviously pulled through. Special thanks to Ruchika for the footage. अपनी स्कूटी पर हम आ चुके हैं और इसकी हालत ख़राब हो चुकी है. ज़्यादा मोशन सिक हो गया था ये जीप में. जब ये सही हो जाएगा, we'll be going to get breakfast. We just had to come back to our stay, goStops Coorg for our breakfast. Believe me when I say this, यहाँ पर हर एक मील टेस्टी था. Finally parked our scooter at the Nalknad palace और अब हम यहाँ से अपना ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं. It should take us about 3.5-4 hours to get to the top of Tadiandamol peak. As for the trek, we can divide it in 3 parts. Part 1 from Nalknad palace till the Tadiandamol base. Part 2 from Tadiandamol base till the boulder point. Part 3 from boulder point till the Tadiandamol peak. And then we descend back to the starting point and see Nalknad Palace, as well as I will take you to a secret offbeat waterfall. नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ. अभी एनालाइज कर रहा है अपने पानी को. मेरा नहीं, तूने भरा. एक और बार पेट बिगाड़ना नहीं सह सकता. ये भी सही तरीका है ट्रैक करने में. वजन बढ़ा दिया क्या? तो जितना हम हिलते डुलते और हर जगह से ठुकते हुए जा रहे हैं. I didn't think this is an easy ride either, but
Well, we do not have much to complain. चलने से तो बेटर ही है. जहाँ हम एटलीस्ट 1-1.5 घंटा और लगाते हैं तक पहुँचने में. भैया लोगों की वजह से काफ़ी ज़्यादा जल्दी पहुँच गए हैं. So finally हम लोगों ने टिकट्स ले लिए. चेक पोस्ट से तडियांडमोल पीक इज़ अबाउट 4 किलोमीटर्स, जो कि हमें और 2-2.5 घंटा लग जाएगा कवर करने में. पोस्ट द चेक पोस्ट जब से हमने प्रॉपर ट्रैक स्टार्ट करा है, वी हैव बीन डूइंग इट ऑन अ ट्रेल, और कंटिन्यूसली हमारे चारों तरफ क्रिकेट्स की आवाज़ आ ही रही है. So the peak itself approximately at 5,800 feet, and it is the highest peak in Coorg. Okay, you guys can take your guess कि हम लेफ्ट वाली पीक चढ़ेंगे या राइट वाली. We have no idea. या खुदा, ये तो सीधा शॉट लेने वाला. तो रेन प्रेडिक्टेड है फॉर 2 o'clock. अभी 1 बज गए हैं और ऑलरेडी हमारे चारों तरफ क्लाउड्स इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए हैं. सो वी थॉट माइट एज वेल फ्लाई द ड्रोन नाउ. Ascent almost इतना ज़्यादा steep हो गया. Like my next step is almost on my knee level at times. तो काफ़ी effort लग रहा है. And in another news, हम उधर से ही आए थे और वो already पूरा cloud से covered है. So to our earlier doubt कि हम राइट वाली पीक पर जाएंगे या लेफ़्ट वाली, जो राइट वाली पीक थी वो ये है मेरे पीछे, और जो लेफ़्ट वाली है उसके लिए ये ट्रेल जा रही है और हम लेफ़्ट वाली पीक लेने वाले हैं. ट्रेल और घनी होती जा रही है और अब वी आर नॉट श्योर कि हम ट्रेल पर है या नहीं. वी जस्ट होप कि हम ट्रेल पर ही चल रहे हैं इस समय, दैट दिस इज़ द मार्क ट्रेल, बट वील फाइंड आउट सून इनफ आई सपोज. $500-600 meters more before we reach the top of the Tadiandamol peak. और मैं दूसरी वाली पीक के लिए क्रिप कर रहा था कि कितना असेंट है. ये भी सीधा सीधा ही चढ़ने वाले. वही तो बहुत बाकी है, अभी भी उतना बाकी है, खत्म ही नहीं हो रहा है. बहुत ज़्यादा सांस फूल गई अब तो.
फाइनली हम टॉप पर पहुंच गए हैं, तडियांडमोल पीक के। ऑल्दो जिस टाइम पर हम पहुंचे इतना ज़्यादा फॉग और क्लाउड्स हमारे चारों ओर इस समय कि विजिबिलिटी तो कुछ खास है नहीं in terms of view, but the sheer satisfaction that we finally made it to the top, that's nice. And the fact that we are at the top of the Tadiandamol peak, that essentially means that we are on the highest peak of Coorg, which stands tall at about 5,800 feet. Is that cool? This trek very difficult. 3 days back we were in Chikmagalur. I climbed highest peak of Karnataka, not only Coorg. Very easy, not even one sweat. Oh, I'm wet now because of this. वैसे तो हमें नीचे उतरने में पूरे 2 घंटे लग गए थे, पर वेल द मैजिक ऑफ एडिटिंग। हम तडियांडमोल पीक का ट्रैक कंप्लीट करके आ चुके हैं एंड राइट नाउ as I speak I'm entering into the premises of Nalknad Palace. We parked our scooters right outside this and I told you that we'll be visiting this once we are back, but as it turns out पहला दरवाज़ा बंद है, मैं उसके अभी दूसरी साइड जा रहा हूँ। ये वाला दरवाज़ा भी बंद लग रहा है। So looks like कि यहाँ पर अभी हर जगह लॉक ही लगा हुआ है। I don't think we can get anything else here. So we'll move on to our next spot, the waterfall. And on our way to this peaceful offbeat waterfall, this happened. ये एलिफेंट अभी यहाँ इन्हें विलेज में मिला तो वो अब उसे ट्रक में रख के वापस जंगल में छोड़ने जा रहा है। Elephants are really fascinating, aren't they? And in the vlog for day 3, which is our next and final part, we actually got a chance to go up close and personal with these elephants, visited the largest teaching center for Tibetan Buddhism, as well as enjoyed our one of the most peaceful sunsets ever. Make sure to check that out. और अब डायरेक्टली पहुंचने के लिए So finally we have reached the Chelavara waterfalls. The actual pin, the Google pin, it takes you to the Chelavara waterfalls का ऊपर वाला part where you could swim. Now let's go to the viewpoint for Chelavara waterfalls. While following the Google pin, रास्ते में आपको एक बोर्ड दिखेगा which is Chelavara waterfalls. अगर आप वहाँ से जाएंगे then you can get to the viewpoint. That is what we are going to do now. There you go. That's the Chelavara waterfalls right there. अभी ये फुल फोर्स में नहीं है क्योंकि मानसून यहाँ स्टार्ट ही हो रही है। चल मतलब देखने में तो अच्छा लग ही रहा है। अब बैठ के बोलूँगा जो भी बोलूँगा थक गया हूँ खड़े खड़े। तो ये वाटरफॉल वन ड्रॉप वाटरफॉल नहीं है, कैस्केडिंग वाटरफॉल है। ऊपर से मतलब ये लेयर्स में गिरे जा रहा है। अभी फॉल्स, फिर उसके बाद इरुप्पु फॉल्स हैज आल्सो बिकम क्वाइट पॉपुलर अमंग टूरिस्ट्स ऑफ इट, बट Chelavara waterfalls there is no one except the two of us. So I highly recommend that if you want to just witness a waterfall with no one around, Chelavara waterfalls might just be it. इतनी मेहनत के बाद तो you can make sure that you at least what? Like, comment and subscribe.